हाय दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपजेट्स में। सो माई सेल्फ यश गौड, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन डेवलपजेट्स. So DevelopJet is going to create some web series of lectures related to Django and many more projects. So today we are going to start our new series on YouTube for creating some basic projects in Django. Main motive is to learn about basic Django concepts. I hope you all know about Python basics. सो बट आई एम सेइंग दिस थिंग बिकॉज पाइथन बेसिक्स हम लोगों को इसमें काम आने वाले हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को पाइथन बेसिक्स आते होंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आइए शुरू करते हैं. वी आर गोइंग टू मेक दिस लेक्चर्स इन हिंदी एंड also in mixed English, so everybody can understand what I'm going to say. So start करते हैं. ठीक है. So firstly I am going to open a Visual Studio Code. It's an IDE. IDE means, I hope you all know, Integrated Development Environment. It's open source. So why I'm using this software, it will help us to write code. It will also provide a terminal. For our complexity we are using this. So now you can all see here is the path in terminal. So currently I'm in D drive. In D drive, in D DevelopJets folder, and then development and then OTube. ओके. सो हम लोगों को करना क्या है, फर्स्टली हम लोगों को यहाँ पे हम लोग अपना एक फोल्डर बना लेते हैं. तो मैं इधर एक फोल्डर बना लेता हूँ, cd सॉरी make directory mkdir. I hope you all know about some commands for cmd. So currently I am working on Windows system. So here is the command prompt. For Mac operating system currently I don't have, तो मैं उस पर वीडियोस नहीं बना रहा हूँ. तो this is for cmd there is some changes in commands. So I hope you will search this on our blog section. So let's start. We are not wasting our time. Okay. So for creating a project, I am typing a mkdir, which means make directory, and then our directory name. So I am creating a directory name first with the command of mkdir. Okay, then hit enter. So you can see कि इसने एक फर्स्ट नाम का फोल्डर क्रिएट कर देता है एंड फोल्डर इज एम्प्टी. ठीक है. ओके. सो नाउ व्हाट आई नीड टू डू, हम लोगों को इस फोल्डर के अंदर भी जाना है इन टर्मिनल. फॉर दिस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को एक कमांड यूज करनी है cmd की, cd. cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी. सो आई एम टाइपिंग cd and then our folder name first, and now you can see currently I am in first. This is our folder path and currently I am in first folder. Okay. So अभी हम लोगों को इतना काम हुआ कि हम लोगों ने अपना फोल्डर क्रिएट कर लिया है जिसमें हम हमारे प्रोजेक्ट को रखने वाले हैं. सो फर्स्टली हम लोगों को चेक करना है कि हम लोगों के पास पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं. तो फॉर दिस व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सिंपली टाइपिंग पाइथन वर्जन. सो आप लोग देख सकते हैं करंटली आई एम यूजिंग पाइथन 3.10.9 वर्जन. आई होप यू ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिस इंस्टॉल पाइथन इन योर सिस्टम. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग हम लोगों के ब्लॉग सेक्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको इसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा. एंड करंटली आई एम नॉट गोइंग इन डीपर हाउ वी कैन इंस्टॉल पाइथन. ओके. सो हम आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्टली अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों का पाइथन है, अभी हम लोगों को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. So here is the simple command for creating a virtual environment. Python -m venv. Then you need to simply write a virtual environment name. For my side, I am creating .venv. You can create by any name which you want to create. आप जो भी अपना virtual environment का name लिखना चाहते हैं. Okay, so now I am hitting enter. It will create an environment with the name of virtual environment with the name of .venv. So now we are waiting. Yeah.
our virtual environment is created now. So you can see, so yeah, हम लोगों का virtual environment create हो गया है. तो हम लोग अभी टर्मिनल के थ्रू इस चीज़ को चेक कर लेते हैं. So when I type dir, which means directory, it will display all files and folder in current directory. So you can see here is the file folder with the name of .venv, and when I click on .venv folder, we can see here is some files, and in the venv folder we have scripts folder, and in the script folder we have activate.bat, and there are some files. Okay, so currently what we need to do, we need to activate this virtual environment. For this you can simply type your virtual environment path of activate file. So I am typing my folder name, virtual environment name .venv and slash, then I am going in scripts and then slash, then activate. So आप लोग देख सकते हैं कि इसने .venv करके एक हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर दिया है. तो हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज क्यों कर रहे हैं? इट कैन बी क्वेश्चन, ये आप लोगों को दिमाग में आ सकता है कि इसका फायदा क्या है. एक्चुअली हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि हम जो भी मॉड्यूल्स इसमें इंस्टॉल करेंगे वो हम लोगों के सिस्टम में इंस्टॉल न होकर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल होगा. ठीक है. आई होप यू ऑल हैव पाइथन नॉलेज, तो इतना डीप में जाने का जरूरत है नहीं. इंस्टॉलिंग Django, pip install Django. So and simply hit enter. So why I'm using this pip command? Everybody knows, I hope you all know Python basic. So you know pip is the package manager. It will install package for us when I'm using this command with the package name. तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का Django इंस्टॉल हो चुका है. Now I am going to check Django is installed or not by simply typing a command Django admin version. So you can simply see here is the version of Django. So congratulations, your Django is installed. Now our second thing what we need to do, we need to create a Django project for our project. For this what I'm creating, I am simply typing a command Django admin, then start project and our project name. For this I am going to create a project with also a name of first, and simply hit enter. It will create a first name folder in your current directory. You can see here's the first name folder with the name of first, and when I click on this first folder you can see here's one folder and one file. First folder name is same our project name, and second file name is manage.py. So manage.py is the Python file in Django which will provide by Django. So ये किस काम आती है? तो manage.py में ऑलरेडी कुछ फंक्शंस हैं जो काम आते हैं, वो हम धीरे धीरे इस लेक्चर में सीखते जाएंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में. एंड here is folder first which have some files just with the name of init.py. so इनका मैं आपको एक नॉर्मल दे देता हूँ इनका डिस्कशन की why we are having these files, and we will discuss this on our upcoming lectures very well. So for this here is init.py. Mainly when I click on this file, it's file empty. So why is there this file? This file describe this is the module. So when we have any module, this file denote कि ये आपका module है. There is sgi.py. We will learn about these files later in upcoming lectures. Here is the settings.py file. This file contains all settings of our current Django project.
So we will see all of these things in our current upcoming lectures. Here is urls.py, which will contain our all URLs, and here is also wsgi.py file. Okay, so I hope everybody know. I know very well you don't know about these files, because I'm thinking about you have only basic knowledge of Django and Python. We will discuss these things in upcoming lectures. For now, what I'm doing, uh, I'm running up our server, so we can check our Django project is created or not. For this, I am using this command python manage.py and run server. Okay, so when I click, wait a minute, currently I am having a error. It's saying no such file and directory. So when I click on dir, okay, so currently I'm not in that folder. So cd first, I need to go on that particular folder. Then I need to click python manage.py run server. So it will help us to starting our development server on this URL. In this URL, you have an IP, this is public IP, and here is the port number which we are using to serve this website on our web page. When I simply click on this control plus click, so it will open this URL on our web page. So you can see, congratulations, your Django project is created. I hope you all understand what I did in this lecture. अगर आप लोगों को इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड आल्सो वी आई विल मेंशन आवर ब्लॉग लिंक इन दिस यूट्यूब captions. Okay, so thank you so much. We will learn how to create a Django app in our upcoming lecture. So abhi ke liye bye bye, thank you.